Hello students, let us continue our chapter State Government and its roles in health. In the first part of this chapter, we try to understand what is the state government and what is how it's formed, its composition, and in this second part of the chapter, our topic is the role of the state government in health. It is the role of the government to provide welfare of the people. Here, welfare means like for example, education, health, employment, to provide housing facilities to the people, the development of roads in the city, providing electricity to each house, etc. are the main duty of the government, and these all things comes in his main motive or motto, which is the welfare of the people, and one of them is the health. Meaning of health, then means the ability to remain free of illness and injuries. But health is not only about the diseases. It itself cover many other things like the other factors which affect the health are clean drinking water, providing pollution free environment, and also provide adequate food to each and everyone. In adequate food means the food with full of nutritions. These all things also comes in health. Our next topic is the healthcare in India. As you can see here, the over the last 35 years, the expenses on the healthcare services are like this. We are expensive a lot to hospitals. We see a lot of increase in the doctors also. In drugs, government is making drugs. India is one of the main countries who's making drugs means medicines. So, and another one is the private insurance also is improving in India. So the conditions is though improving in India, but still we have to do a lot. Especially you can see in the last 35 or 30 years, in these 3 decades we see a rapid increase in the facilities of healthcare in India. India has the largest number of medical colleges in the world, and it is these colleges who produces largest number of doctors, which is approximately 15,000 every year. So in India, it produces 15,000 new doctors every year. As we saw here in this map also, that the healthcare facilities
In the year 1950, there were 2,717 hospitals in India, which increased in 1991 with 11,000, more than 11,000 hospitals, and in the year just after 10 years, it increased, and now there are more than 18,000 hospitals in India in the year 2000s. As you can see here, also we do a lot of investment also in this field, and this is the reason that India get a large number of medical tourists from the nearby countries, especially from the nearby countries. India is the main center which provide healthcare services in a very cheap amount. India is the fourth largest producer of medicines also in the world. So this is how we see the present situation of India in these all points in healthcare in India. That India is one of the major countries who is providing healthcare services, but still there are some problem in healthcare services in India which we are facing. Most of the doctors are settled in the urban areas. They are not taking too much interest in settling in the rural areas. Though we see increase in the number of the doctors and hospitals, but maximum of them are in the urban areas only, which is only 30% of total India's population who is living in urban areas. And that is why the people of the rural areas have to travel by distance. Still, we see more than 5 lakh death because of the tuberculosis, and 2 million cases of malaria is normal in India every year. If we see the total communicable diseases, now communicable diseases means those diseases which spread because of the infections and bacteria easily through virus, and 21% diseases of all the communicable diseases are because of the water. They are waterborne diseases. Half of the children in India do not get adequate food, and that is why they are facing the problem of undernourished. Here, this map of India. Also, we can see the status of doctors at primary health centers established by Indian in India. These are the situations where we see a good conditions in these five states in India: Rajasthan, Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka, and Goa, where you can see these are the sanction posts in position. Vacancies are left, maximum are posted in their post in India. The percentage of vacancies are very less here. While we see some the worst or the bottom countries in the primary healthcare centers in India are the Mizoram,
Uttar Pradesh, Maharashtra, West Bengal, Chandigarh. So this is how there are some regions in India which develop themselves in the field of healthcare facilities, but there are some who have to do a lot in this field. Now, in healthcare in India, first of all, here these points we done the present situation of healthcare services in India. Then we done the problems of in India, and in healthcare services now we have to do the remedies. Means now what we need in India to solve these problems. First of all, we need appropriate healthcare facilities in rural areas, especially India's maximum population, that is 70% populations are living in rural areas. So we have to provide healthcare services like health centers, hospitals, laboratories, and many other facilities to these areas. The government also have to attract doctors for healthcare facilities or services which government is providing in the rural areas. Obviously each and everyone is doing work for money, so government has to give increase their salary income so that they doctors get ready to do work in the rural areas, and also establish the infrastructure in these areas. Government need advancement in medical science and technologies also. This thing also helps to increase the healthcare facilities in India. And I think the major thing comes here is the that if we provide each and everything to the people, but if people are not able to afford it, then so it is also necessary that these healthcare services will be or would be offered by all the people of India. Means government has to provide free services to these areas, and if not possible then in a very cheap rate. Let us फटाफट revise all these things in Hindi. इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में जो है हम लोग गवर्नमेंट का रोल क्या है हेल्थ में वो देखेंगे. पिछले पार्ट में हमने देखा था गवर्नमेंट कैसे बनती है. यहाँ गवर्नमेंट का रोल की बात करें तो गवर्नमेंट का जो मेन मकसद होता है वो होता है लोगों का भला करना. अब भला करने से मतलब लोगों को सब तरह की सुविधाएं देना, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, घर की सुविधा, सड़कें, बिजली, पानी, सब कुछ जो है वो देना. सिर्फ देना ही नहीं बल्कि अच्छी क्वालिटी का देना, ये भी मकसद होता है गवर्नमेंट का. नाउ इसी में से एक महत्वपूर्ण बात है हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य. अब हेल्थ से मतलब क्या है? हेल्थ से मतलब है वो एबिलिटी जो हमें बचा के रखती है बीमारी से और तकलीफों से, चोट से. ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो इसमें काम करते हैं, जैसे कि हेल्थ सिर्फ इसी से नहीं होती है. हेल्थ का मतलब सिर्फ डिजीज से ही नहीं है, बल्कि इसमें पीने का साफ पानी मिलना, पर्यावरण जो कि प्रदूषण मुक्त हो, और अच्छा खाना जो कि सेहतमंद हो, ये भी ज़रूरी है. अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इन इंडिया. इंडिया में हेल्थ केयर कैसा है इस वक्त? जैसे कि आप यहाँ पर नक्शे में देख रहे हैं कि जहाँ तक पैसा लगाने की बात है तो पिछले 35 सालों में सरकार ने काफ़ी हद तक पैसा लगाया है. इन 35 सालों में देखा जाए तो यहाँ पर जो आखिरी के 3 दशक हैं वहाँ पर एकदम से हमको जो है बढ़ावा मिला है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, डॉक्टर्स हो, दवाइयों का क्षेत्र हो, या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल का बनना हो. हर क्षेत्र में जो है बढ़ावा आया है. खैर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन क्या है इंडिया में हेल्थ केयर की. इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज वाला
देश है, मतलब सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज जो है वो इंडिया में है। और जाहिर सी बात है, दुनिया में सबसे ज़्यादा डॉक्टर जो पैदा होते हैं वो इंडिया में होते हैं। सालाना 15,000 डॉक्टर इंडिया पैदा करता है। इसके अलावा जैसे कि हमने ऊपर नक्शे में भी देखा, इंडिया में 1950 में जहाँ 2000 से ज़्यादा हॉस्पिटल थे, 91 में 11,000 से ज़्यादा हो गए, तो 2000 में वो 18,000 से ज़्यादा हो गए। इंडिया इसी कारण से जो है बहुत बड़े पैमाने पर अब मेडिकल टूरिज्म यानी कि दूसरे देशों द्वारा अपना इलाज कराने के लिए भी जाना जाने लगा है। और सबसे बड़ी बात कि जो दवाइयाँ हैं इंडिया में बहुत ही सस्ती मिलती हैं। इसका मुख्य कारण है कि इंडिया दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है दवाई बनाने वाला, और एक्सपोर्ट करने वालों में से भी मेन है। हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया में अब जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है समस्या की, कि आखिर हम लोग क्या क्या समस्याएं फेस कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि ज़्यादातर डॉक्टर्स, इस बात सही है कि हम लोग 15,000 डॉक्टर पैदा करते हैं, पर ये सभी डॉक्टर्स जो हैं शहरों में काम करना पसंद करते हैं, गाँव में नहीं। जबकि हमारी 70% पॉपुलेशन गाँव में रहती है। और यही कारण है कि गाँव के लोग जो है उन्हें बहुत लंबा डिस्टेंस, दूरी जो है वो तय करनी पड़ती है अपने इलाज के लिए। अभी भी हाल ये है कि सालाना हर साल 5 लाख लोग टीबी के कारण मर जाते हैं, तो वहीं पर 2 लाख केसेस मलेरिया के आना नॉर्मल बात है। इंडिया में अभी भी आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको पूरी तरह से खाना नहीं मिलता है, या फिर मिलता भी है तो उसमें वो सेहतमंद नहीं होता है। अब हेल्थ केयर में जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है कि ऐसा क्या किया जाए, वो क्या सुझाव है। तो पहली चीज़ कि हमें ज़रूरत है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को बढ़ावा देना गाँव में, क्योंकि हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन तो गांव में रहती है। जैसे कि हेल्थ सेंटर्स का बनाना, वहाँ पर हॉस्पिटल बनाना, लेबोरेटरीज का बनना, आंगनबाड़ी का बनना वगैरह वगैरह। और इसके अलावा गवर्नमेंट को कुछ इस तरह के कदम उठाने चाहिए ताकि जो डॉक्टर हैं वो आकर्षित हों गांव में काम करने के लिए, जैसे कि उनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाए। इसके अलावा जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको बढ़ावा दिया जाए। नीड ऑफ एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, मतलब कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी और साइंस का इस्तेमाल करते हुए इसको बढ़ावा देना चाहिए। और सबसे मुख्य बात कि सब कुछ बढ़ावा देने के बाद भी जो मुख्य बात आती है वो आती है कि इसको आम लोग अफोर्ड कर सके। मतलब कि या तो ये बिल्कुल मुफ्त हो, और अगर कुछ चीज़ बेचनी भी, खरीदनी भी पड़े, तो वो बहुत ही ज़्यादा सस्ते दर पर लोगों को मिले, ताकि हर किसी के लिए आसान हो सके स्वास्थ्य सुविधाओं को पाना। So this is how class we complete the second part of the chapter of the state government and its role in health. We continue this chapter in our third part also. Still, if you face any kind of problem and doubt, you can contact me, or you can send me your doubt, which is to me. I will definitely reply you, or you can visit my blog also, which is bipindogra.blogspot.in. Thank you.